Hi students. So today we learn the basic integration for the students who are in 11th standard, and of course you have the whole chapter in 12th standard also. The introduction will help you for applications in physics of 11th standard and of course 12th standard also. So we just discussed the basic formulas and the rules of integration. Okay. So integration is defined as the inverse process of differentiation. वो derivatives का उल्टा है. That means what? If that is, if derivative of f of x is equals to f dash x, right? So derivative of f of x is equals to f dash x, then you can say f of x is the antiderivative, or you can call primitive antiderivative, derivative का उल्टा, antiderivative or primitive, or you can simply call the integral or the integral of f dash x. And symbolically you write integration of f dash x dx is equal to f of x plus c. So you write that as integration of f dash x f of x dx. Integration f dash x dx is equal to f of x plus c. Clear? So ये integration का sign है of f dash x. dx represents with respect to x. Okay, dx represents with respect to x equal to f of x plus c. Here c is called the constant of integration. C is called the constant of integration. Now why you add c here? So I'll write c is the constant of integration. And what is the significance of c? So c is basically the constant of integration. Okay. Now why do we add c here? So we said it's a derivative of f of x, right? What is the derivative of f of x? F of x ka derivative is f dash x. So please understand this. You need not write this. Derivative of f of x is equal to f dash x, right? So what is the derivative of f of x plus 10? That's going to be f dash x plus 0. So that's again going to be f dash x, right? What is the derivative of f of x plus some other constant 100? It's going to be f dash x plus 100 का derivative 0. So it's again going to be f dash x, है ना? So derivative of f of x होने दो या f of x plus constant होने दो, उसका आंसर लास्ट में f dash x आएगा. F of x or f of x plus any constant, the answer will be f dash x, right? That means उल्टा किया तो f dash x का integration can be f of x, or it can be f of x plus 10, or it can be f of x plus 100. So it can be any constant plus, right? उल्टा किया तो. So we write a constant c there. So therefore you say derivative of f of x is equal to f dash x, then integration of f dash x will be equal to f of x plus c, where c is called the constant of integration. C is called the constant of integration. Clear? We can write one small example. You can say, for example, derivative of sin x. What is the derivative of sin x? याद करो, sin x का derivative was cos x. Therefore, you can write integration of cos x dx. Please write that dx. That dx says integration has to be done with respect to x, will be equal to sin x plus c. Clear? So यहाँ पे हम लोग ने c लिखा है, and ये जो आंसर मिला है, that is called as indefinite integral. It's called as indefinite integral.
indefinite integral. It's called indefinite integral because indefinite answers are possible. The c value can be anything. c का value 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Okay, so it's indefinite integral. Indefinite integral. Clear? So this is the basic definition. अगर f of x का डेरिवेटिव f dash x है तो उसका उल्टा f dash x का इंटीग्रेशन is f of x plus c. And this is one example. This is called as indefinite integral. You always have a constant with the final answer there. Now what is definite integral? So once you know the basic integration, I can define what is definite integral. So what is definite integral? Now definite integral comes in this form: integration of a to b f dash x dx. So integration of f dash x, integration of f dash x is equal to f of x, right? What is the integration of a to b f dash x dx? That will be equal to f of x, and we don't write c here, we apply the limit values. So we write this way, rectangular brackets में a and b, where a is called the upper limit value. That's the upper limit of the integration, and b is called the lower limit value. B is the lower limit value of the integration. B is the upper limit. A is the upper limit value, and b is the lower limit value. So when you actually solve this further, you will get integration of a to b f dash x dx will be equal to f of x, and the limit values are a to b, which you apply. So how do you apply the limit values? You write upper limit value minus lower limit value. It's going to be upper limit value minus lower limit value. So apply the upper limit value. तो x के यहाँ पे b डालो, minus f of a, upper limit value minus lower limit value. इसका लास्ट का जो आंसर मिलेगा ना, the final answer will always be a constant. इसमें c भी नहीं आएगा और x भी नहीं आएगा. You won't have c, you won't have x here, क्योंकि हम लोग ने x की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दी है. इसका लास्ट का आंसर एक डेफिनेट आंसर है, सो इट्स कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल. इट्स कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल. we can see one example here. So we start from the beginning and I can explain the whole thing again. Derivative of sin x is equal to cos x, right? And therefore integration of cos x, उसका उल्टा, बराबर ना, with respect to x is equal to sin x plus c. This is what we call as indefinite integral. Indefinite integral में last का final answer will always contain x and c. Okay. Now suppose the question is integration of 0 to pi by 2 cos x dx. So here the formula remains the same. Sin का डेरिवेटिव cos है, अगर sin का डेरिवेटिव cos है तो cos का इंटीग्रेशन sin होगा, तो cos का इंटीग्रेशन विल बी sin, तो यहाँ पे sin आएगा. ओके, बट प्लस सी नहीं लिखना है, लिमिट्स अप्लाई करना है, तो उसको लिखने का sin x एंड लिमिट्स अप्लाई करने का. सो यू राइट द लिमिट वैल्यू 0 to pi by 2. देन हाउ टू अप्लाई द लिमिट वैल्यू? इट्स गोइंग टू बी अपर लिमिट वैल्यू sin pi by 2 minus lower limit value sin 0. It's always upper limit value in the function minus lower limit value in the function. So that comes out to sin 90 is 1 and sin 0 is 0. So your final answer is 1. Okay. तो उसका लास्ट का आंसर एक कांस्टेंट आया है. You have a definite answer for this. So this is called as definite integral. Clear? So how will you identify a question? तुम कैसे पहचानोगे वो सम डेफिनेट का है इनडेफिनेट का है? क्वेश्चन में अगर खाली इंटीग्रेशन दिया होगा और लिमिट वैल्यूज नहीं दिया होगा, इट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रल. क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के साथ लिमिट वैल्यूज भी दिया होगा, इफ द लिमिट वैल्यूज आर गिवन, तो उसको बोलना है डेफिनेट इंटीग्रल. लिमिट वैल्यूज दिया होगा तो डेफिनेट, लिमिट वैल्यूज नहीं दिया होगा तो इनडेफिनेट इंटीग्रल. क्लियर? So that's how you define integration. Integration is the reverse process of derivatives. If limit values are not given, then it's called indefinite integral. The last answer will contain a c as well as a x function. And if the limit values are given, then you don't write c, you apply the limit values. The last answer is always a definite constant, so it's called as definite integral. Definite integral. Okay. Now you're supposed to know standard formulas of integration. So basically वो सब derivatives का उल्टा ही है.
So here we study now the standard integration formulae. So here the first formula is integration of x raised to n again. Now x raised to n का derivative क्या था? What was the derivative of x raised to n? n into x raised to n minus 1. Okay, यहाँ पे उल्टा है. Integration of x raised to n dx. That will be equal to x raised to n plus 1. X raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. It's x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. इसके सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है मैथ्स में, फिजिक्स में और बहुत जगह पे. दिस इज x raised to some number. For example, if you have integration of x raised to 3 dx, so you will write x raised to 3 plus 1 4 upon 3 plus 1 4 plus c, right? The next example, integration of x raised to 5 dx, you can write x raised to 6 upon 6 plus c. Integration of x raised to 10 dx, you will write x raised to 11 upon 11 plus c. One more example, integration of x raised to 3 by 2, a fraction. So going to be x raised to 3 by 2 plus 1 is 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. Clear? So the formula is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. ऊपर का नंबर इंक्रीज करना है. Okay, so x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. That's the integration of x raised to n. This is x raised to some number. The second formula is integration of a raised to x. Now यहाँ पे a is a number. This is a exponential function. The first function is x raised to number. The second formula is number raised to x. Number raised to x. Now a raised to x का डेरिवेटिव था a raised to x into log a. A raised to x का integration will be a raised to x upon log a. A raised to x upon log of a प्लस सी. यहाँ पे लॉग का बेस इज ऑलवेज ई, बोलने का ज़रूरत नहीं है. पूरा कैलकुलस में लॉग का बेस सारे फॉर्मूलाज में ई होना चाहिए. ओके, सो इट्स ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी. नो इसी फॉर्मूला में इफ़ यू हैव ई रेज टू एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स? दैट्स गोइंग टू बी ई रेज टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई टू द बेस ई 1 हो जाएगा प्लस सी, है ना. वैसे भी डेरिवेटिव्स का उल्टा है. डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स था, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स है. So ये formula और first formula don't mix up. In the first formula you will have x raised to number. In the second formula you'll have number raised to x. Number raised to x. I can write one example for this also. If I have to express some example, I can say integration of 5 raised to x dx. So that will become 5 raised to x upon log 5 plus c. Upon log 5 plus c. That's a example for integration of number raised to x. Number raised to x. Okay, so please be clear with the formula of the first and the second function. First function में x raised to number था, second formula में number raised to x. So check the formula. X raised to n का integration is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Second formula number raised to x. A raised to x is a raised to x upon log a plus c. E raised to x का integration is e raised to x upon e raised to x plus c. The third formula is trigonometric functions you have now. So let's learn the formula for integration of sin x. Now sin x का derivative cos x था, है ना. sin x का integration is minus cos x plus c. And cos x का integration is sin x plus c. Sin x plus c. सो साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस. डेरिवेटिव्स में साइन का डेरिवेटिव कॉस था और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था. यहाँ पे उल्टा है. साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सी. साइन एक्स प्लस सी. द फोर्थ फॉर्मूला, नाउ टैन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर था, राइट. टैन का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर था, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विल बी टैन एक्स प्लस सी. दिस इज नॉट द फॉर्मूला फॉर टैन. दिस इज सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस सी. डोंट राइट tan का इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर. tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर था. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस सी. एंड सिमिलरली cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस cot x प्लस सी. माइनस cot x प्लस सी. ओके,
आई वॉर्न यू अगेन, टैन और कॉट का इंटीग्रेशन नहीं लिखा है हम लोगों ने. पहले हम लोग ने साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टैन एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी. देन सेक का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या था, सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, राइट. तो उल्टा करो, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स into tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी. ये भी sec x into tan x है, ओके. एंड cosec x into cot x का इंटीग्रेशन, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन इज माइनस cosec x प्लस सी, माइनस cosec x प्लस सी. So sec square x का इंटीग्रेशन इज tan x plus c, cosec square का इंटीग्रेशन इज माइनस cot x plus c, sec x into tan x का इंटीग्रेशन इज sec x plus c, and cosec x into cot x का इंटीग्रेशन इज माइनस cosec x plus c, minus cosec x plus c. Okay. Now if you might ask what is the integration of tan, then I'll tell you tan, cot, sec and cosec, the different set of formula there. So basically this comes from derivatives का उल्टा. साइन का डेरिवेटिव कॉस था, साइन का डेरिवेटिव कॉस था, साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस था, है ना. तो कॉस का इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी. फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था, तो साइन का इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी. टैन एक्स का डेरिवेटिव वॉज सेक स्क्वायर एक्स, राइट. तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज टैन एक्स प्लस सी. कॉट का डेरिवेटिव वॉज माइनस कोसेक स्क्वायर, सो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी. sec x का डेरिवेटिव was sec x into tan x, right. So sec x into tan x का इंटीग्रेशन will be sec x plus c. cosec का डेरिवेटिव was minus cosec into cot. So cosec x into cot x का इंटीग्रेशन will be minus cosec x plus c, minus cosec x plus c. Clear? Now if you want to learn the formulas of tan, cot, sec and cosec, I write that formulas, and there is a term called as integration by substitution, in which you learn how the formulas have come there. Okay, so you can just write the formulas if you want and remember them. We will study the detailed output, I mean how we got the formulas, in the integration chapter. So remember, ये formulas में tan, cot, sec और cosec का integration नहीं है. Okay, now उनका formulas अगर पढ़ना है तो ये सुनो फिर. Integration of tan x का integration is log of mod of sec x plus c, log of mod of sec x plus c. कॉट का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी. देन इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टैन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी. Okay, and the last formula is integration of cosec x. Cosec x का integration is log of mod of cosec x minus cot x plus c, minus cot x plus c, or it's log of mod of tan x by 2 plus c. Okay, so these are the four formulas for tan, cot, sec and cosec. These are not the formulas for tan. This is the integration of sec square x. Sec square का integration tan है, cosec square का minus cot है, sec x into tan x का integration sec x है, cosec into cot का integration minus cosec है. Clear? This is tan, cot, sec, cosec, what you study in 12th standard का chapter there. The next formula is integration of, now derivative of log x was, log x का derivative था 1 by x, है ना. Therefore integration of 1 by x dx is equals to log of mod of x plus c, log of mod of x plus c. The mod sign is kept so that the final answer should be positive. Log exists only for positive numbers, not for negative numbers. This is again very important for physics and chemistry. 1 by x का integration is log of mod of x plus c, log of mod of x plus c. 1 by x square का integration, 1 by x square का integration will be minus 1 by x plus c, minus 1 by x plus c, minus 1 by x plus c. Okay, then derivative of root x, root x का derivative, derivative क्या था 1 by 2 root x, है ना. तो उसको उल्टा करेंगे तो 1 by root x, 1 by root x का integration, 1 by root x का integration is 2 root x plus c. 1 by root x का integration is 2 root x plus c. 1 by root x, this is not root x, this is 1 by root x. Please be careful here, and I am writing something else also. What is the integration of root x then?
दिस इज नॉट रूट एक्स. रूट एक्स का फॉर्मूला है तो ये याद रखना. रूट एक्स इज एक्चुअली एक्स रेज टू हाफ. So use the first formula. It will become x raised to half becomes x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. So root x का integration नहीं है वो. Okay. This is 1 by root x. 1 by root x का integration is 2 root x plus c. 1 by root x का integration is 2 root x plus c. If it is root x है ना root x तो उसका integration will be x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 plus c. Clear? देन x का डेरिवेटिव क्या था. x का डेरिवेटिव वॉज 1. अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन विल बी x प्लस सी. सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ dx और 1 dx. सो 1 dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी. 2 dx का इंटीग्रेशन विल बी 2x प्लस सी. 3 dx का इंटीग्रेशन विल बी 3x प्लस सी. यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विल बी kx प्लस सी. 5 dx का इंटीग्रेशन विल बी 5x प्लस सी. So integration of 1 dx is equal to x plus c. Integration of 2 dx is 2x plus c. Integration of k dx is equal to kx plus c. Clear? And one more formula which basically comes from the first formula, but you are supposed to remember that also very well. What is the integration of x then? What is the integration of x? So x is actually x raised to 1, right? है ना. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ऊपर 1 है ना. So use the first formula. X का integration will be x square upon 2 plus c. So please remember, be fluent very fast with these formulas. Integration of x is equal to x square upon 2 plus c. X square upon 2 plus c. Then you had inverse functions जो हम लोग ने डेरिवेटिव्स में किया था. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स is equal to sin inverse x plus c, or you can also write minus cos inverse x plus c, but हम लोग सम्स में sin inverse यूज़ करते हैं खाली. Minus cos inverse x plus c, any one formula, or either this or that. The 11th formula is integration of 1 upon 1 plus x square. याद करो, tan inverse का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square था ना, तो 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन will be tan inverse x plus c. Or if you want, you can write minus cot inverse x plus c. And the last one, integration 1 upon x into root of x square minus 1. So that's going to be sec inverse x plus c or minus cosec inverse x plus c. Clear? So these are the standard formulas. So learn the formulas. Please write the formulas, learn them thoroughly first, okay? And then there's one more point to be said here. All the formulas are written in terms of x. The first formula is integration of x raised to n. A raised to x, e raised to x, sin x, cos x, है ना. सारे formulas हम लोग ने x में लिखे हैं, बराबर. तो ये सब formulas में x के जगह पे अगर एक linear function है ax plus b. This is very, very, very important, very important. Okay. So in all the above standard formulas, हम लोग ने सब x में लिखा था. If we have ax plus b, this should be strictly a linear function. Okay. और कोई function नहीं चलेगा. It should be a linear function. Linear means the power of x should be strictly 1. So it's a linear function. So you have ax plus b. If you have ax plus b, so I've written in all the above standard formula, if we have ax plus b, a linear function, instead of x, then use the same formula, use the same formula in terms of ax plus b, use the same formula in terms of ax plus b, and divide the answer by the coefficient of x, and divide the answer by the coefficient of x. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए है तो ए से डिवाइड करने का, 2 होगा तो 2 से डिवाइड करने का. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल हियर.
integration of cos x is equal to what? Sin x plus c, right? Then what is the integration of cos 3x? 3x. So the answer will be sin 3x upon 3 plus c. You have to divide the answer by coefficient of x. Clear? सो सारे फॉर्मूलाज में x की जगह पे अगर ax प्लस बी आया तो आंसर में भी x की जगह पे ax प्लस बी लिखने का एंड डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x. One more example. This is very important for many sums there. 1 by x का integration. 1 by x का integration was log of mod of x plus c. Then what is the integration of 1 upon 3x plus 5? So here the answer will be a linear function hai. So it's going to be log of mod of 3x plus 5 the whole upon 3. Divide the answer by coefficient of x plus c. Clear? So whenever you have x के जगह पे ax plus b, but it should be only for linear functions, not for quadratic function, cubical function or non-linear functions. Be very careful there. Clear? So that's very important. And then finally we talk about the rules of integration. The rules of integration. Now rules of integration says, the first rule says, if you have integration, ब्रैकेट में ना एक फंक्शन है प्लस और एक फंक्शन है, दो फंक्शन, 3, 4, 5 कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लस फंक्शन आया. यू कैन टेक दैट इंटीग्रेशन इनसाइड. ओके, उधर dx भी होता है हमेशा, इंटीग्रेशन के साथ हमेशा dx होता है. सो यू वांट इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स द होल dx. सो इन दैट केस you can write this as integration of the first function dx plus integration of the second function dx. तो जब भी दो फंक्शन का बीच में प्लस या माइनस साइन है, डेरिवेटिव्स भी वैसा ही था, तुम लोग डेरिवेटिव्स अंदर लेके जा सकते हो. यू कैन राइट फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव. अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा, माइनस साइन, तो आंसर में भी इधर माइनस साइन आएगा. ओके, सो द रूल इज एप्लीकेबल फॉर प्लस माइनस बोथ, एनी नंबर ऑफ टर्म्स. What is the integration of three terms? U plus V plus W. So integration of U plus integration of V plus integration of W. Okay. The second rule says, if you have integration of constant into a function dx. So keep the constant out and you integrate the functions. Integration of f of x dx. Okay. ये दोनों को merge करोगे तो you can write integration of constant into a function plus or minus constant into second function the whole dx. Very simple. You can write constant first out, integration of the first function dx, plus होगा तो plus, minus होगा तो minus, k2 into integration of gx dx. Clear? So constant बाहर रखना है, plus minus होगा तो integration को अंदर लेके जाने को. Clear? दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छे से याद रखना. सारे फॉर्मूलाज में एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी आया तो आंसर में भी एक्स के जगह पे एक्स प्लस बी रहेगा. एंड डिवाइड द आंसर बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. डिवाइड द आंसर बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. डिवाइड द आंसर बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ़ यू वांट आई कैन राइट अ फ्यू फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. उसका कॉम्पोजिट फॉर्मूलाज भी है. लाइक you can write all the formulas the way we have written in derivatives. The first formula was integration of x raised to n dx. That was x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. बराबर. तो इसका composite formula क्या होगा? x का जगह पे ax plus b रखना है. So it's going to be ax plus b the whole raised to n dx. That's going to be ax plus b the whole raised to n plus 1 upon n plus 1. है ना? Plus c. And you divide the answer by the coefficient of x. The coefficient of x is a, तो a से divide करना है. Don't forget this. Clear? तुम्हारा सेकेंड फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x. a रेज टू x का इंटीग्रेशन वॉज a रेज टू x अपॉन log a प्लस c. राइट, a रेज टू x अपॉन log a प्लस c. इसका कॉम्पोजिट रूल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू, मैंने कैपिटल ए लिखा है नीचे, रेज टू ए एक्स प्लस बी. ऊपर x के जगह पे ए एक्स प्लस बी है तो आंसर में आएगा a रेज टू ए एक्स प्लस बी अपॉन log ऑफ कैपिटल A. And divide the answer by coefficient of x. The coefficient of x is a plus c. Clear? A raised to x upon log a plus c. So it's going to be a raised to ax plus b upon log a. And divide the answer by a. So divide by a plus c. So similar, you can write all the formulas there. The third formula was integration of e raised to x. That was e raised to x plus c
तो उसका composite formula will be e raised to ax plus b dx. That's going to be e raised to ax plus b upon a plus c. The fourth formula was integration of cos x dx. Cos x का integration was sin x plus c. इसमें भी x का यहाँ पे ax plus b लिख दो. It's going to be cos of ax plus b the whole dx will be equal to sin of ax plus b upon a plus c. Clear? The fifth formula was integration of sin x. That was minus cos x plus c. So integration of sin ax plus b dx will be equal to minus cos of ax plus b the whole upon a. Divide the answer by coefficient of x plus c. Clear? The next formula was integration of sec square x. Tan x नहीं है, sec square x. Sec square का integration tan x plus c था. तो उसका composite rule होगा integration of sec square ax plus b the whole dx will be equal to tan of ax plus b and divide the answer by coefficient of x plus c. Integration of cosec square x dx. Cosec square x का integration was minus cot x plus c. So here the composite rule will be integration of cosec square ax plus b. X की जगह पे ax plus b. That will become minus cot of ax plus b upon a plus c. Clear? The next formula is integration of sec x into tan x. Sec x नहीं, sec x into tan x का integration is sec x plus c. So here the composite rule will be integration of sec ax plus b into tan ax plus b the whole dx. So here the answer will be sec ax plus b upon a plus c. Sec of ax plus b upon a plus c. The next formula is integration of cosec x into cot x. So cosec x into cot x का integration था minus cosec x plus c. So here also instead of x you replace ax plus b. This becomes integration of cosec ax plus b into cot ax plus b the whole dx will be equal to minus cosec ax plus b upon a plus c. Done? The next formula is integration of 1 by x dx. That's very important. That was log of mod of x plus c. And the composite rule is still more important. Integration 1 upon ax plus b. You have huge number of sums everywhere. It's going to be log of mod of ax plus b the whole upon a plus c. While writing be careful. It's whole upon a. Whole upon a मतलब पूरा upon a आएगा. बहुत सारे बच्चे इसका नीचे upon a लिखते हैं. That is wrong. ये पूरा upon a आएगा. Log of mod of ax plus b the whole upon a plus c. Clear? Integration of 1 by x square. 1 by x square का integration था minus 1 by x plus c. So इसका composite rule will be integration of 1 upon ax plus b the whole square dx will be equal to minus 1 upon ax plus b and divide the answer by coefficient of x. तो a इधर ही आएगा plus c. Okay, divide किया तो यहाँ पे a आएगा. The next formula is again very important. Integration of 1 by root x. 1 by root x का integration was 2 root x plus c. This is 1 by root x. I hope you remember 1 by root x. So उसका composite rule will be integration of 1 upon root of ax plus b dx will be equal to 2 root of ax plus b and divide the answer by coefficient of x plus c. 2 root of ax plus b upon a plus c. 2 root of ax plus b upon a plus c. And you know, I generally say the students to remember this also along with that. What was the integration of root x? Root x का integration was x raised to 3 by 2 upon 3 by 2. तो उसका composite formula will be integration of root of ax plus b dx. अगर आया वो 1 by था 1 by और ये root है. This is going to be ax plus b the whole raised to 3 by 2 upon 3 by 2 and divide the answer by coefficient of x. तो नीचे a भी आएगा plus c. Clear? So this is how you remember the composite formulas also.
Okay, and let's solve one or two examples to make you understand the concepts very clearly. So let's solve one question. Suppose they ask you integrate, or they say evaluate integration of 3x square minus 10x cube plus 7x minus 5 by x the whole dx. This is your question. Okay, so let's solve this. We say let I is equal to integration of 3x square minus 10x cube plus 7x minus 5 by x the whole dx. क्लियर. सो इसमें 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 आएगा, राइट. फिर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 10 बाहर जाएगा. 7x का इंटीग्रेशन 5 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन. सो आई एम राइटिंग द आंसर्स देयर. 3 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 minus 10 is a constant, goes out. X cube का integration was the integration of x cube, x raised to 4 upon 4 plus c, plus 7 into x का integration will be x square upon 2 minus 5 constant बाहर जाएगा. 1 by x का integration will be log of mod of x. ओके, और c है ना, सब के लिए एक ही बार c लिखने का. सब कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर दो, एक ही कॉन्स्टेंट आएगा. एंड देन अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, अदरवाइज दैट्स योर आंसर. सो 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा. विल गेट 5x रेज टू 4 अपॉन 2 प्लस 7x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c. क्लियर. सपोज यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस कॉस 4x प्लस 1 अपॉन 7x प्लस 3 द होल dx. ओके, now you know the formula. साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस. यहाँ पे 3x है, ध्यान दो. यहाँ पे 4x है, और ये 1 बाई एक्स नहीं है, 1 बाई 7x प्लस 3 है. तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, कॉस का फॉर्मूला इज साइन, और 1 बाई एक्स का फॉर्मूला इज लॉग मॉड x, है ना. बट यू हैव 3x 4x एंड 7x प्लस 3 है. सो यूज द फॉर्मूलाज प्रॉपरली. द आंसर विल बी साइन का इंटीग्रेशन विल बी कॉस, बट साइन 3x है तो आंसर विल बी कॉस 3x अपॉन 3 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x अपॉन 3 आएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन x है तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन विल बी साइन 4x अपॉन 4, राइट. और 1 बाई 7x प्लस 3 है तो उसका इंटीग्रेशन विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ 7x प्लस 3 एंड यू हैव टू डिवाइड द आंसर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 प्लस c. इज दैट क्लियर? You might have definite integral ka sums also. So when it is a definite integral, because you have a lot of applications in physics there. So when it's a definite integral, see that you apply the values clearly there. So suppose you have integration of 0 to 3. Suppose you have a question of integration of 0 to 3. 3x square minus 4x plus 1 the whole dx. So how do you solve this now? So this becomes 3 into x square का integration is x cube upon 3 आएगा, minus 4 into x का integration x square upon 2 and 1 का integration x and the limit values. Now यहाँ पे limit values दिया है तो don't write c, limits apply करना है तो 0 to 3 लिखना है. After cancellation you get x cube minus 2x square plus x and the limit values are 0 to 3. Now apply the upper limit value. पहले upper limit apply करो. upper limit apply किया तो you get 3 का cube 27 minus 2 into 3 का square 9 तो 18 plus 3, है ना, minus lower limit apply करो तो 0 का cube 0 का square all is 0, so it's going to be 0 only. So your answer will be 27 minus 18 9, 9 plus 3, 9 plus 3, the answer is 12. So your final answer will be equal to 12. Clear? So अगर वो डेफिनेट का सम है तो दिस हाउ वी सॉल्व द सम देयर. हाउ डू यू सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 3, 0 to pi by 3, 0 to pi by 3 tan square x dx. So you can't integrate tan square. Tan square का कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना, sec square का फॉर्मूला है. So you can write identity here.
You can write this as integration of 0 to pi by 3. Tan square x को you can write sec square x minus 1. You have identity in trigonometry. याद है सबको? 1 plus tan square theta equal to sec square theta, है ना? तो tan square is sec square minus 1. Now you can integrate. So tell me, sec square x का integration is tan x minus 1 का integration x, and the limit values are 0 to pi by 3. So when you apply the upper limit value, you get tan pi by 3 minus pi by 3, और 0 apply किया तो tan 0 is 0 and 0 again. Solve with the net answer there. Tan pi by 3, tan 60 is root 3. So your answer will be root 3 minus pi by 3. So you can see all definite का final answers are constants. Okay, last का answer में ना तो x आएगा ना c आएगा. The last का answer is always a constant there. Clear to all? And the last question, the last example. How do you solve integration of 0 to 1 x square upon x square plus 1 the whole dx? So how do you solve this? Integration of x square upon x square plus 1 the whole dx. So here I'll make some adjustment in the numerator. I can write integration of 0 to 1 x square upon the denominator is x square plus 1. What I'll do is I'll write the numerator में I can write plus 1 and minus 1. This is one adjustment I have done here, plus 1 and minus 1, so that your sum gets simplified very easily. Plus 1 and minus 1 किया हम लोगों ने. Clear? The whole dx. Now if I separate the terms, I get integration of 0 to 1. Separate the terms, I get 1 minus 1 upon x square plus 1 the whole dx. Clear? Now you can use the formula. So 1 ka integration will be, so your answer will come as 1 ka integration x minus 1 upon x square plus 1 ka integration. What's the integration? 1 upon 1 plus x square. It's tan inverse x. Please learn the formulas thoroughly. And the limit values are 0 to 1. Okay. So you can apply the upper limit value. When you apply the upper limit value, you get 1 minus tan inverse 1 minus lower limit value apply 0. Both the values becomes 0 here. तो दोनों 0 हो जाएगा. Clear? Then tell me what is the final answer there. क्या मिलेगा आपको आंसर बताइए. So the answer will be 1 minus tan inverse 1 is pi by 4. This is the answer. Again the answer has got only constants, no x term, no constant c here. Clear? So these are definite ka sums there. So please learn the formulas and see the formulas are to be written, basic formulas and then basic composite formulas. Learn the formulas thoroughly, and then of course you'll be able to solve the question, the basic questions of physics. Okay, then again in the next video I'll put the standard methods of integration. We study the whole chapter integration in depth. What do you require for your 12th standard syllabus, as well as for the entrance portions also. Thank you so much.